Okay, I think we are live. Namaste, everybody. We are back one last time this season for our final Pro Kabaddi League live stream. मेरा नाम लावण्या है एंड आई एम जॉइंड बाय माय कॉलीग मयंक और हम यहाँ पे PKL फाइनल के बारे में और जिस सीज़न से हमारी जो टेकअवेज हैं उसके बारे में डिस्कस करने के लिए आए हैं. पहले मयंक, दिल दिमाग का आपका बहुत तेज़ी से एक कंपटीशन चल रहा था व्हेन आई आस्क्ड यू टू पिक अ विनर. कैसा लग रहा है? रिवर्स जिंक्स काम कर गई आपकी? Uh, like what I feel कि दोनों ही टीम बहुत डिजर्विंग थी and that's why they were in the finals. But as far as the rhythm was mattered, क्योंकि जिस दिन जो टीम सबसे अच्छा खेलती है वो जीतती है. हमने देखा कि पिछले दोनों मुकाबले में लाइक हेड टू हेड की बात करी जाए तो both were the games won by पुनेरी पल्टन. लेकिन जिस दिन मैटर किया था उस दिन जयपुर came good. They were solid enough to win the second title. एंड पुनेरी के लिए वी कैन से कि बैड बैड डे कह सकते हैं क्योंकि टीम वाइज और ऑब्वियसली उनके जो दो मेन लीडर्स हैं वो भी नहीं खेले इंजरी के कारण. सो मेनी थिंग्स डिडंट वेंट टू दैट साइड और इसी के कारण जो रिजल्ट हम देख सकते हैं अभी दे आर नॉट द चैंपियंस. एब्सोल्युटली. सो इस एपिसोड में हम बहुत सी ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे. ऑब्वियसली द फाइनल बीइंग वन ऑफ देम, जस्ट व्हाट हैपेंड इन दैट फाइनल. फाइनल कहाँ जीता गया, कहाँ हारा गया, ये हम डिस्कस कर लेंगे. एंड वेट, इफ आई कैन लेट मी जस्ट पुट अप द स्क्रीन ऑफ व्हाट वी आर गोना टॉक अबाउट. एक सेकेंड. Yeah, so if you guys can see your screen right now, we will look at what went right for Jaipur Pink Panthers. उन्होंने क्या सही किया था इस फाइनल में. We will look at what went wrong for Puneri Paltan. Despite इतने स्ट्रेंथ्स के साथ आने के बावजूद वो फाइनल में वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाए. So we'll see what went wrong there. जयपुर की जर्नी थ्रू द years searching for title number 2. Number 4, perfecting Rahul Chaudhary's role, which ended up being a very important aspect for Jaipur through this season. फजल अत्रचली के लिए अगला अभी क्या आएगा, वील डिस्कस दैट एज वेल एंड टेक अवेज फ्रॉम दिस सीजन 9 ऑफ वीवो प्रो कबड्डी. ऑब्वियसली जैसा हम वीक आफ्टर वीक करते आए हैं, इफ़ यू गाइज हैव एनी कॉमेंट्स और इफ़ यू वॉन्ट टू pitch in about what we are talking about, then please do let me know. I will try and accommodate that here. Hold on, Mayank, what are you texting? There is a lag, isn't there? I felt that. Okay, Not hold very on. sure. Let me try and fix that. There is a simple solution to this. Okay, if someone is there with us, like they can let us know if there is any lag so that we can rectify it. Yeah. Takeaways from this season 9 of Vivo Pro Kabaddi. So I can no, I don't obviously think there's a lag. हम week after week करते आए हैं. If you guys have any comments, okay. But either way, I so that we don't have about what we are. I'm on Apache electricity connections. I'm not taking a risk. I've taken off the background so that it's just us. ठीक है? Okay, yeah. All right. So I see that Kabaddi Yoddha's podcast has joined us on this stream. Hi guys. He says hi guys. Hello Mayank and Lavanya. Hi, कैसे हैं आप? Please drop your comments about the final. We would love to hear from you. Mayank, let's get started. पहले just thoughts about this final. What did you make of what happened in the game? Yeah. So obviously we have discussed कि ये गेम बहुत ही क्लोज रहने वाला था. Like you had the feeling कि अगर ये क्लोज नहीं हुआ तो इट्स गोना बी वेरी डिफिकल्ट फॉर पुनेरी क्योंकि पुनेरी जनरली फर्स्ट हाफ में क्लोज रखना जानती है. एंड देन अगर वो हारते हैं, अगर 7 बिग मार्जिन की बात करें तो जस्ट दे जस्ट गिव द सेकंड हाफ ऐसे इजीली अगर जब भी इनके साथ हुआ है. लेकिन हमने ये गेम देखा कि एंड तक भी बहुत क्लोज था. लेकिन इवेंचुअली हमने देखा कि जहाँ जो क्रंच मोमेंट्स थे वहां पे इनफैक्ट द कैप्टन सुनील उन्होंने मोर्चा संभाला था डिफेंस में. ही गॉट 6 पॉइंट. तो उनको अगर हटा दे तो बाकी किसी प्लेयर ने ना सुपर 8 लगाया ना सुपर 10 है किन्हीं के पास, ना ही किन्हीं के पास हाई फाइव है बारिंग सुनील कुमार. सो ऑब्वियसली हमने ये भी देखा कि असलम मोहित जो कि सेमीफाइनल में भी नहीं थे लेकिन उस समय वहां उनके लिए पंकज चले थे. उस समय उनके उनके लिए मोहम्मद नबी बख्श ने परफॉर्म किया था जो कि इस बार उतने तरीके से उसको रिपीट नहीं कर पाए. एंड आप देखोगे कि इवेंचुअली जो स्कोर डिफरेंस है वो 3-4 पॉइंट्स का है लेकिन वो उससे ज्यादा क्लोज था. Yeah.
एंड में डेस्परेशन बहुत थी, एंड में मिस्टेक्स काफी आ रहे थे, क्योंकि ये टाइटल ऑब्वियसली आपको आखिरी 2 मिनट में आप क्या चाहोगे कि कुछ भी करके यू वांट टू क्लोज इन द गेम, यू हैव टू स्कोर पॉइंट्स, यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, क्योंकि ये डू और डाई था। ये हारे तो सीजन गया आपके लिए। अपने सीजन में जितने भी अच्छे काम किए हैं, एक तरीके से उसपे पर्दा लग सकता है अगर आप वो क्योंकि ट्रॉफी किसी एक के पास जानी थी, तो शेयर नहीं कर सकते थे। तो इवन इवन दो कि मैच बहुत क्लोज किया और बहुत ही एक्साइटिंग मैच था, बहुत ही फिटिंग फिनाले था, आई वुड से। आज जयपुर केम आउट एज इवेंचुअल चैंपियंस, एंड आई डोंट नो व्हाट एल्स टू से। Yeah, absolutely. I would agree with the fact that it was a very fitting final because बहुत close गया था. एक minute. Was Nabi injured in the second half because Gaurav Khatri came into raid in a do or die raid, which was bizarre. सही बात है, that was bizarre, and BC Ramesh was asked about it actually press conference में कि गौरव खत्री को raid क्यों किया गया था, and his explanation was something along the lines of बंदा 6'2" का कुछ है, we know that he has capability in raiding which is why we sent him in. अगर आप ऑनेस्टली इसको देखा जाए, आई काइंड ऑफ फेल्ट लाइक दे वर अ लिटिल टेंटेटिव विद नबी बख्श बिकॉज नबी बख्श एक बंदा था जो पॉइंट्स कंसिस्टेंटली ला रहा था फाइनल में बी नॉट एज मच इन रेड ऑब्वियसली बट ही वॉज वेरी क्रूशल फॉर देम इन डिफेंस. ही वॉज डूइंग मोस्ट ऑफ द हैवी लिफ्टिंग एट वन पॉइंट इन दैट लेफ्ट कॉर्नर कवर लेफ्ट कवर. सो इट जस्ट फेल्ट लाइक दे डिडंट वांट टू गिव हिम अप. लाइक अगर वो डू और डाई रेड में उसको भेजते और वो टैकल हो जाता देन ही विल नॉट बी ऑन द मैट फॉर देम. And इवन आई वाज yeah, इवन लाइक व्हाइल आई वाज ब्लॉगिंग, मुझे भी यही लगा, क्योंकि गौरव खत्री लंबे थे, तो बीसी रमेश का ये थॉट हो सकता था कि उनको भेजे, और अगर मतलब ये चांस था, अगर वो लग बाय चांस उनका काम कर गया होता तो यू वुड हैव गॉटन अ पॉइंट, एंड उनके पास मोहम्मद नबी बख्श होते जो कि डिफेंस में ही वाज ट्रेमेंडस यस्टरडे. yeah, आपने देखा कि वो जिस तरीके से उनका सोलो टैकल्स आ रहे थे, तो उनको exactly. उनको रिस्क नहीं करना चाह रहे थे. मे बी शायद ये रीजन होगा, और थोड़ा कहीं ना कहीं जस्टिफाइड भी है. पूरा रिस्क आपको लेना पड़ सकता है ऐसे सिचुएशंस में. कभी कभी वो काम करेगा, कभी वो बैकफायर करेगा, जो कि हुआ. Absolutely. And I just would like to, because it's some form of poetic justice even though they lost. पिछले एक लाइव स्ट्रीम में किसी ने बोला था कि नबी बख्श को ये प्लेइंग 7 में क्यों खिला रहे हैं. तो आई होप कि उस बंदे को इसका आंसर मिल गया होगा क्वाइट वेहमेंटली ऑल्सो. बट ऑनेस्टली इफ यू लुक एट पुणे, आई हैड एन इशू विथ जस्ट हाउ दे अप्रोच दिस फाइनल. मुझे ऑब्वियसली एक बात तो ये है कि दे वर कमिंग इन विदाउट टू ऑफ देयर मेन प्लेयर्स विच इज़ असलम एंड मोहित, विच बाय द वे वो भी मुझे बहुत कंफ्यूज कर रहा है बिकॉज इतना क्या इंजरी है कि दे वर नॉट एबल टू प्ले. और आप लोग बोल रहे हो कि दे आर ओके फॉर द फाइनल, वी आर कीपिंग देम फॉर द फाइनल एट दैट सेमीफाइनल स्टेज, एंड देन दे डिडंट एंड अप कमिंग एंड प्लेइंग. अच्छी बात है दैट यू आर प्रिजर्विंग योर रेडर्स, यू डोंट वांट टू रिस्क देम इन गेटिंग अनदर इंजरी, बट थोड़ा बहुत ट्रांसपेरेंट हो तो सकते थे एटलीस्ट बिफोर द मैच सेइंग दैट यू नो दे आर नॉट गोना फीचर एंड स्टफ. वी फाउंड आउट डायरेक्टली व्हेन द स्टार्टिंग 7 केम आउट. स्ट्रैटेजी भी हो सकती है फॉर ऑल यू नो, बट आई होप दे आर ओके. आई होप कोई ऐसी सीरियस बात ना हो कि दे हैड टू सिट आउट ऑल ऑफ दीज गेम्स. बट हम बात करते हैं पुणे की बेंच स्ट्रेंथ के बारे में, विच इज़ एब्सोल्युटली फाइन. दे हैव आदित्य, पंकज, ऑल दीज गाइज केम एंड स्टेप्ड अप इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द सीजन. पर इस बेंच स्ट्रेंथ का फ़ायदा नहीं होता है अगर उनको मैट प्रैक्टिस लाइक मैट और मैच एक्सपोजर नहीं मिलता. एंड ये बात हमें कल की फाइनल में बहुत अच्छे से दिखाई दिया बिकॉज वो लोग प्रेशर हैंडल नहीं कर पाए. सिंपलेस्ट एग्जाम्पल इज पंकज मोहिते हु वाज सो गुड फॉर देम इन द तमिल तलाइवास गेम बिकॉज उन्हें पता था कि ओपोनेंट भी धीरे खेलेगा. Jaipur was not that kind of opponent, and Pankaj panicked. At one stage, he had 1 raid point in like 15 raid attempts, which is absolutely unacceptable. Unki raiding, Pune's raiding failed them entirely, and this is coming from a raiding unit which has 3 raiders with 100 raid points each. But obviously, unme se 2 did not feature, so that becomes a very important talking point for them. Maybe next season when they have this kind of a bench strength, unko rotate करके खिलाया जाए, maybe like what UP Yodhas did, then they might stand a better chance. Mayank, what do you think about that? Just how the raiding unit performed yesterday. या सो ट्रू, क्योंकि ऑब्वियसली जिस दिन आपको सबसे आप फॉर पुनेरी Yeah. Yes. या या नो सो आकाश शिंदे फेल्ड मिजरेबली. वी सॉ कि उनको लगातार लगातार वो रेड्स कर रहे थे, एंड ही वाज नॉट एबल टू गेट द पॉइंट्स, क्योंकि बहुत सारे एम्प्टी रेड्स लगाए. बहुत सारे रेड्स में वो सीधे के सीधे इवन टू डीप, जहाँ पे उनको डिफेंसिव यूनिट के लिए बहुत इजी हो रहा था उनको टैकल करना भी.
और सेकंड हाफ में आदित्य शिंदे को लाया गया. आदित्य शिंदे वाज गुड, क्योंकि हमने पहले भी देखा है कि वो जब जब आदित्य शिंदे आते हैं मैच में, ही हैज दैट फिटनेस इनटू हिज रेडिंग, क्योंकि ही इज यंग, ही हैज पेस, गुड पेस, उनका दिमाग बहुत तेज चलता है वाइल रेडिंग. तो हमने देखा कि करंट सिचुएशन में ही वाज प्रीटी गुड. लेकिन बाकी अगर पंकज मोहिते हो गए, आकाश शिंदे हो गए, दे आर नॉट अप टू देयर मार्क, जिस हिसाब से उनका परफॉर्मेंस रह चुका है. Yeah, और मोहम्मद नबी बख्श भी बहुत, उनका उनका अगर आप ओवरऑल परफॉर्मेंस देखो एज अ ऑलराउंडर, ही वाज प्रीटी प्रीटी गुड. बट एज फार एज रेडिंग इज कंसर्न, रेडिंग में उतना कंट्रीब्यूट कल नहीं कर पाए. एंड इवेंचुअली अगर पूरा का पूरा सेटअप देखो तो रेडिंग ही है जो एरिया जहाँ पे टीम मात खा गई थी, क्योंकि मल्टीपल ओकेजन पे हमने देखा कि सुपर टैकल अपॉर्चुनिटीज थी एंड दे ग्रैब दैट. सो हाँ, पुणे अगर कहीं मैच हारी है तो मे बी उनके रेडर्स की अनअवेलेबिलिटी yeah. एंड जो बेंच स्ट्रेंथ है उनका ना परफॉर्म करना इज द मेन रीजन, इज व्हाट आई फेल्ट. Absolutely, absolutely. And I realize there's a comment here on our channel, but मेरा like screen buffer हो रहा है. I think there was something along the lines of, did Pune lose faith in Nabi Baksh? Yeah, they did. Puneri Paltan lose confidence in Nabi, and they had to play just because no other experienced raider was there. But I think it's the exact opposite. They, given that if you're saying they lost confidence in Nabi Baksh, he would have not featured in those playoffs. And the fact that they had put him in the semi-final and final, and look at his position in yesterday's game. He was paired alongside Fazel. So the entire point, otherwise you'd see him sometimes occupying that central sort of space, or you'd see him like continuously change his positions. But yesterday he was constantly paired with Fazel. So there's an obvious reliance there, which obviously we have spoken about so much कि नबी बख्श की यूटिलिटी क्या है फजल के लिए, हमने बहुत बात किया है इसके बारे में. But the simple, I don't think there was a loss of faith there. In fact, I think he was the only one they blindly trusted to actually get them points. Or rather, he's the only one they could rely on to get them points. Hook or by crook, raid या defense, किसी भी तरह वो point लेके आता. So, See, and he came good. If you want to know what's the mindset behind Puneri Paltan for Mohammad Nabi Baksh, I think you should check out Fazal's interview, क्योंकि in that interview उसने clearly बोला है कि उसको कितना faith है मोहम्मद नबी बख्श पे. Yeah. And before that interview मेरा भी थोड़ा mindset अलग था. I felt something different about Fazal, about मोहम्मद नबी बख्श. But अगर आपके कैप्टन का आपके प्लेयर पे इतना फेथ होगा, Yeah. अगर he knows कि उनको he can raid and he can come handy when it comes to the defense. So you know कि क्या स्ट्रेचर रखते हैं वो अपने टीम में. Yeah. सो मोहम्मद नबी बख्श का टीम में होना, आई गेस मे बी वो दोनों रीजंस कह सकते हो कि आपके दो प्राइमरी रेडर, दो सबसे स्ट्रॉन्ग रेडर हैं, Yeah. वो आपकी टीम में नहीं है, जिनके इर्द गिर्द आपने पूरे की पूरी स्ट्रेटेजी बनाई होगी. आपको नई स्ट्रेटेजी में लाने के लिए ऑब्वियस सी बात है, जब इनिशियली सिर्फ और सिर्फ असलम बाहर हुए थे, आई रिमेम्बर, असलम की जगह तब मोहम्मद नबी बख्श आ गए थे. अगर ऐसा उनका कोई सिनेरियो नहीं होता तो असलम कुड हैव इजीली रिप्लेस्ड बाय इधर आकाश और आदित्य और पंकज और एनीवन, तब भी मोहम्मद नबी बख्श बाहर ही बैठ सकते थे. Yeah. लेकिन उनकी प्लानिंग अकॉर्डिंग टू नबी बख्श चली और उनको गेम टाइम मिला, कॉन्फिडेंस आया. बिग मैच प्लेयर तो थे ही वो, और उसी कॉन्फिडेंस पे ही प्लेड टिल दिस पॉइंट, और एंड he proved himself that he could be so handy. Absolutely, absolutely. And since we're talking about one Iranian, I think it's important to speak about the other one as well. फजल की अगर आप बात करेंगे तो I still feel like he held back from the sort of full-blown defender that he is. If he had stepped up, obviously उनकी वो शायद टच पॉइंट्स में भी एक दो यहाँ वहाँ दे देते, which anyway ended up happening. Like there was this one brain fade moment second half में जहाँ अजित आया था कि अर्जुन आया था, I don't remember clearly, but I think he was trying to block him and then he ended up not, maybe he was in a position where he couldn't react that soon, Where and the Ajit, raider, they yeah, jumped raider over jumped him. up over him. Yeah, Correct. jumped over him and he ended up giving a point and he was visibly frustrated with himself. The pressure got to him as well. So and this is his own words, he draws from the energy his team has. So when his team performs well, he performs well. ये codependency शायद उतना अच्छा नहीं है. हमने इस लाइव स्ट्रीम में एक like a unidirectional consequence के बारे में बात की है, जहाँ पे we spoke about maybe it's not good for the team to rely so much on Fazal for strategy, for this, for that. But it was Arjun Deshwal जिसके साथ वो it was brain Arjun fade Deshwal. हुआ. And in fact, the second half is when they allowed Arjun Deshwal to actually find a few raid points. Yeah. So it came purely from errors. They could have easily kept Arjun quiet because he was scared of the left corner. He was avoiding Fazal and Nabi the entire first half. And then that is when the
Abhinesh and all of these guys managed to come. And other thing that didn't work for Pune, despite their tackle points being very high, is their dashes were all over the place. बहुत सारे points ऐसे चले गए जहाँ उतना momentum में आते हुए the defender also would end up giving up a point, or the raider, दो तो they wouldn't. clearly I remember was from Abhinesh Nadarajan Yeah. who looks very like I don't know uncertain थे. उनका डैश बहुत ही अच्छा होता है, जी लेकिन अगेन उनके साथ भी सेम दिक्कत थी जो हमने पहले भी डिस्कस किया, जो एम अभिषेक के साथ थी. जी वो टाइमिंग में कहीं ना कहीं मार खा जाते हैं. जी एंड मल्टीपल ओकेजन्स में, एक बार अजित एक बार अर्जुन, दे Yeah. यूज द लॉबी एंड मिडलाइन टच करके दे गेव अ पॉइंट. No, so exactly, no. The issue was that the raider was too close to the midline for them to even attempt that dash. Point Correct. kya tha? You could have Correct. let them get frustrated and go back. So see, this is the thing. Pune, which has usually been defensively quite decent, also knows how to play that waiting game. उन्हें पता है कि opponent को कैसे frustrate किया जाए, but they didn't do that. That never came up, and that's probably because raiding नहीं चला तो panic होके they ended up trying to do everything they could in defense. 6 out of 10 times it worked, but those 4 times when it didn't work ended up giving points to the opponent, which was just muft mein point de rahe the. And if you look at it, those 3-4 points could have been the difference between maybe a tie and then attempting to win the game in those 5 raids wala concept, and the result that they have right now. So the defense also has like a lot of introspection to do. Fazel, but at the end of the match had said ki okay, haan, haar jeet hoti rehti hai. He was very disappointed, but haar jeet hoti rehti hai. And for what it's worth, I'm very proud of the team, because at some point all of these guys have stepped up, which is why we are here, is what he had said. Fair enough. Fazal की बात हम थोड़ी देर बाद करेंगे, especially about what this means for him and his future, him and Nabi Baksh going forward from this team. But हमें obviously अभी बात जयपुर की तो करनी ही पड़ेगी. What a performance. I didn't want them to win, but it's very hard not to look at this and say wow, because they had, उनकी भी प्रॉब्लम्स थी, उनके भी रेडर्स इन द फर्स्ट हाफ नहीं चल रहे थे. देयर वाज अ 2 or 3 point डेफिसिट बिटवीन द टू टीम्स इन द स्ट्रोक ऑफ हाफ टाइम, बट इनका जो कंपोजर था वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट. दे न्यू व्हेन टू टैप पुनेरी पल्टन एंड वेयर टू टैप पुनेरी पल्टन एंड देन टेक इट फॉरवर्ड. मयंक, आप ये गेम ब्लॉक कर रहे थे. व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस? यू साइलेंटली वांटेड देम टू विन, सो आई सॉ यू एंजॉयिंग योरसेल्फ देयर. So tell me how the process was of following the game on the blog. See, we have discussed it multiple times and more often than not हमने देखा है कि जो टीम एज अ टीम खेलती है किसी पर्टिकुलर बिग मैच में, they often turn out to be the champions. और सेम चीज देखा कल के मैच में भी कि सारे के सारे प्लेयर्स का एक टीम वर्क था. एंड एक सबसे अच्छी क्वालिटी एक चैंपियन साइड की होती है कि दे डोंट बिलीव इन चॉपिंग एंड चेंजेस. एग्जैक्टली वही देखा हमने. फाइनल में एक भी सब्स्टिट्यूशन नहीं किया गया क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं थी. हमने एकमात्र ऐसी टीम है अपार्ट फ्रॉम तमिल, इफ नॉट, क्योंकि तमिल के साथ तो चलिए थोड़े बहुत इंजरी कंसर्न्स आ गए थे तो देवर फोर्स्ड टू डू सम चॉपिंग एंड चेंजिंग. लेकिन इनकी बात की जाए तो मल्टीपल ओकेजन्स में हमने देखा है कि एक सदी हुई 7 इनको पता थी सीजन के स्टार्ट से. अजित कुमार नहीं चल रहे थे तब भी इन्होंने लगातार मौका दिया था. वी हैव ऑफन टॉक्ड अबाउट भवानी राजपूत को उतना मौका नहीं दिया गया था, राहुल चौधरी को दिया गया था. इन्होंने एंड तक वो मेंटेन करके रखा. इन्होंने शो किया कि किसी पे फेथ दिखाने का असली मतलब क्या होता है, उनको मौके देना, उनको ग्रूम करने का असली मतलब क्या होता है. और हमने देखा कि ओवर द टाइम अजित कुमार केम सो गुड कि अगर पूरे का पूरा आप प्लेऑफ्स देख लो, अर्जुन का रहना नहीं रहना ऑब्वियसली डिड मैटर फॉर देम, लेकिन अगर अजीत नहीं होते तो आई डोंट थिंक सो कि ये क्वालिफाई भी कर पाते, मतलब सेमीफाइनल से आगे भी निकल आ पाते कि नहीं. दोनों मैच के जो साइलेंट हीरो रहे हैं वो अजित कुमार रहे हैं इन द रीडिंग यूनिट. एंड डिफेंस तो इनका सॉलिड है ही. अगर आपके 4 में से 3 डिफेंडर्स साहुल कुमार, अंकुश एंड सुनील कुमार टॉप 10 लिस्ट में आते हैं बेस्ट डिफेंडर्स के, तो आप सोच सकते हो कि कितनी सॉलिड टीम है डिफेंसिव वाइज. प्लस इनके जो 4th डिफेंडर है रेजा मीर वगैरह, ये भी टॉप 10 के थोड़े ही बाहर हैं. तो आप देख पा रहे हो कि ये चारों के अगल बगल फिर अभिषेक के साथ है जिनको कल इन्होंने खिलाया इंस्टेड ऑफ राहुल चौधरी, क्योंकि दे मस्ट हैव फाउंड कि उनको उनका नीड नहीं लगा होगा कल के. क्योंकि हम जानते हैं कि प्रेशर मैचेस में जनरली अगर कोई दोनों टीम अगर इक्वल स्ट्रेंथ लेके आती है तो वो कहीं ना कहीं मैच लो स्कोरिंग होता है. आई एम नॉट
जनरलाइजिंग एवरीथिंग मोस्ट ऑफ Yeah, द केसेस में. yeah, और दोनों के पास एक अच्छी डिफेंसिव यूनिट थी, तो दे फोकस ऑन द डिफेंस मोर देन द रेडिंग. तो वो absolutely. काम किया जयपुर के लाइक एज अ चार्म. एंड ये टीम इतनी सॉलिड थी और एज अ टीम खेली, एंड दैट्स व्हाई दे आर द इवेंचुअल चैंपियंस. एब्सोल्युटली. एंड आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कही कि डिफेंस पे एक सॉर्ट ऑफ इम्पेटस ज़्यादा था, विच इज़ एक्चुअली डेलिबरेट मोर देन एनीथिंग एल्स, बिकॉज वो देख सकते थे कि पुनेरी पल्टन्स डिफेंस वॉज वर्किंग अ लिटिल मोर. So what they tried to do was they tried to snuff out the points at the other end. So they did not want to allow bonus points. सुनील कुमार ने बताया था मैच के बाद कि ये एक कॉन्शियस स्ट्रैटेजी था कि उनके रेडर्स रेड पॉइंट्स लाइक टच पॉइंट्स नहीं लेके जा पा रहे हैं, सो दे वांटेड टू ब्लॉक आउट द बोनस ऑल्सो, which worked when Gaurav Khatri went, it worked when Pankaj Mohite went. Pankaj Mohite tried to go so deep for the bonus कि वही अटका गया. Akash Shinde also had the same problem. The issue is Pune के Raiders बहुत ही stiff लगे because they were looking to just get that point and come back. So that mat awareness was not there for them, or they just उस tension में they weren't able to see कि defenders were circling them. So ये बहुत ही सोची समझी एक strategy थी. And because we're talking about Jaipur Pink Panthers, I think we have to talk about Sunil Kumar. उनका जो performance है, leave the points, okay, leave the points aside. But just as a captain, I don't think उन्हें credit मिलती है for what he has managed to do with this team. And that's one of the first things Abhishek spoke about. Huh. Yeah. No, exactly. No. He was the only one who got, if I'm not wrong, they were trophy honi chahiye, and he proved himself, and he scored when it mattered the most. Exactly. So, and the issue managed to do in those points that he has managed to get. The interesting part about making his I'm defenders. not able to. Hello. Yeah. Lavanya? Can you hear me now? Yeah, your voice was like cranking up, so Sorry. I can hear you now. Is it better now? Yeah, it is. Okay, perfect. Sorry, माइक का कुछ इशू हो गया था. या जैसे आप बोल रहे थे सुनील के बारे में, द इंटरेस्टिंग पार्ट अबाउट हाउ ही ऑपरेट्स इज़ दैट उनके बहुत सारी जो कंट्रीब्यूशन है वो पॉइंट्स में काउंट नहीं होगा बिकॉज ही डिडंट गेट दोज पॉइंट्स. सो इवन इन दिस गेम, लाइक पिछले अगर आप मैच में देखेंगे वन साहुल गॉट दोज 10 पॉइंट्स, साहुल ने खुद आके बताया था कि सुनील वॉज कॉन्स्टेंटली इन हिज ईयर टेलिंग हिम व्हाट टू डू. सो बेसिकली Sunil is doing what Fazel did for Puneri Paltan, except without us talking about it so much. So, in a lot of ways, it's very interesting because Gujarat Giants में जब वो थे, he was still good, he was very good, but the defensive responsibility was so heavy on him कि he wasn't able to shine उतना भी, and उतना credit भी नहीं मिला उनको. But to see him do what he's done with Jaipur, I think it's been very, very interesting. In fact, Abhishek ने एक बात बताई थी कि after the game yesterday, he said that जब उनका ये प्रेपरेटरी कैंप हो गया था एंड दे केम बैक टू बैंगलोर फॉर द फर्स्ट लेग, Abhishek had a team meeting with all of the players and the first thing he had asked them was यहाँ इस रूम में कितने लोगों के पास एक PKL टाइटल ऑलरेडी है. एंड सुनील वॉज द ओनली वन हु रेज्ड हिज हैंड, हैविंग ऑलरेडी won it with a previous team, with another team. So he came up there and he said नहीं देखो, इस सीज़न हम जब ख़त्म करेंगे सीज़न को तो यहाँ के सारे लोग टाइटल विनर्स होंगे. सो टू सी दैट काइंड ऑफ leadership, I'm actually very impressed with that because he comes off as a very like उतना बात नहीं करता, maybe to the media, but he's not that I am the leader, I do this, I do that kind of person, and people don't view him that way also. So what he has managed to do with a side where he is not the senior most player, Rahul Chaudhary is the senior most player and he was not made captain, Sunil was, shows how serious Jaipur is about this title. जयपुर की अगर हम बात करेंगे मयंक, तो आई थिंक इट्स ऑब्वियस इन द लास्ट 3-4 सीजन्स उन्होंने बहुत सारी चेंजेस लाए हैं उनके टीम लाइनअप में, कोचिंग सिचुएशन में. अगर आपको याद होगी तो आई थिंक सीजन 7, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हैड राजगुरु सुब्रमण्यम एज देयर कोच and he's now gone on to become an expert with Star Sports and all of that. And they've done this Amazon documentary, Son of Soil, which is there on Amazon Prime. So if you go there and watch it, you'll see वहाँ पे one of the first things that these guys are talking about is अगर हम perform नहीं किया तो हमें निकाला जाएगा. Not in the pressure way, but it's perform or perish in a lot of ways because this team is serious about results. And we see that with how Abhishek sort of views all his sporting entities. He owns Chennai FC as well. We've seen him talk about how he approaches these sporting teams. And
after winning that inaugural season to win this one in such a dominant fashion. ऐसा नहीं है कि जयपुर never had problems ड्यूरिंग द सीजन. इनफैक्ट जयपुर को हमने भी यहाँ पे बहुत धुलाया है, सेइंग दैट क्या हो रहा है, व्हाट इज़ हैपनिंग, नो वन इज सपोर्टिंग अर्जुन, नथिंग इज हैपनिंग इन डिफेंस, दिस वन गाय इज डूइंग ऑल द वर्क. वी हैव सेड दैट. फ्रॉम देयर, इफ वी हैव टू से, if there are like, if we have to talk about the most improved teams in the PKL, one obviously is Tamil Talaivas because of what they have managed to do. You know what, exactly same phrase I was thinking in my mind, ki most improved team apart from Tamil Talaivas, the has slump to they be had Jaipur. has to be Jaipur. Yeah, has to be Jaipur. Given From that, there, from like 8 or 9 in the table to go to the first place is not a joke. क्योंकि लगातार मतलब आपको एक सॉलिड 7 खिलाना, क्योंकि इवन दो इफ दे आर नॉट परफॉर्मिंग, इवन दो यू नो व्हाट, इतने इतने अच्छे परफॉर्मेंस के बाद अजित कुमार के भी, यू नो व्हाट, हाउ मेनी परसेंट ऑफ टोटल रेट पॉइंट्स डिड अर्जुन देशवाल स्कोर्ड? He has scored almost 57%. तब देख लो, रेडिंग हेवी तो था ही, लेकिन जिस तरीके से द टीम मैनेज्ड हिम, जिस तरीके से एवरीथिंग इन एंड अराउंड हिम वेंट, जिस तरीके से डिफेंस स्टेप्ड अप टू व्हाट अर्जुन देशवाल हैड. क्योंकि अर्जुन देशवाल, क्योंकि देखिए सब टीम के पास एक एस रेडर होता है हु परफॉर्म्स वेरी वेल एंड हु हैज दैट, हु रेज द बार लाइक सो हाई, तो सबसे अलग होता है. लेकिन इनकी बाकी टीम ने क्या किया, इन्होंने अर्जुन को चेस किया, उसके एक्सेलेंस को चेस किया, एंड सी सक्सेस उसके अगल बगल भी घूम रहा है. Absolutely. So in the comment section, Shrinu Darling says Arjun D, heart super raider. Absolutely, वो MVP finish कर चुके हैं. He's finished as the league's top defender. I'm sorry, top raider if I'm not wrong. 294 था क्या? 296 most raider, but the best raider award went to Bharat. But as far as most raids and most super tens are concerned, he is the best. I don't understand the Bharat. Okay, never mind. But yeah, fair enough. Maybe league stage में who finished or what? Is that the criteria? No, I guess कि obviously बात है कि जैसे फुटबॉल में होता है कि अगर किसी टीम को गोल्डन बॉल मिल रहा है तो सामने गोल्डन बूट है, तो सामने वाले अगर जो हारती है उनको गोल्डन बॉल दे दिया जाता है. इस तरीके से क्या कंसोलेशन प्राइज था क्या बेंगलुरु को? इतने कह सकते हो क्योंकि एक प्लेयर और दोनों के बीच का मार्जिन उतना बड़ा नहीं है. एंड जिस तरीके से मोस्ट इफेक्टिवनेस भी हो सकता है, क्योंकि टॉप बेस्ट रेडर कहा गया है, नॉट टॉप रेडर. दोनों के बीच में मतलब ऑब्वियसली बात है, जो जितना इफेक्टिव हो सकता है अपनी टीम के लिए. Fair enough. अगर as far as the trophy is concerned, he is the most effective. लेकिन एक टीम में कितना इफेक्ट लाते हैं आप, वो भी शायद मैटर करता होगा. Is this the why they gave that award to Bharat? That makes sense. And another aspect of Jaipur's dominance in this league has been that they finished with the top raider, the MVP, the player of the final, and the top defender. सारे के सारे इसी टीम में हैं. So if there is any indication, any further indication that you need for that of the fact that Jaipur deserved this title, you have to look nowhere else. Just stats को देखें, final award winners को देखें, and then you'll know कि how dominant they've been. Very dominating season. Yes, exactly. जिस तरीके से I remember कि बीच में पटना का जो 3 सीजन काफी डोमिनेटिंग रहा था, अगर उसमें से जो एसेंस निकाला जाए, ऑब्वियसली बात है बहुत ही सुपरफिशियल लेवल पे कहना होगा, लेकिन जिस तरीके का डोमिनेटिंग सीजन इनके लिए रहा था, स्पेशली आफ्टर सेकेंड हाफ में तो they were like this miles ahead of the Hyderabad leg really changed things for them. They just like उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं. Absolutely. So that is about Jaipur's sort of performance this season. But I think one very important thing that we have to discuss. Wait, before that, I just saw one comment that said, "तुम लोग कौन हो?" राजेंद्र शिंदे जी, हमारा नाम लावण्या और मयंक है. हम लोग स्पोर्ट्स स्टार में काम करते हैं. दिस इज़ अ वेबसाइट and India's oldest sports magazine. You can please check us out on www.sportstar.thehindu.com. हम लोग हर हफ्ता जब से PKL शुरू हुआ है यहाँ आके PKL के बारे में बात करते हैं. अपनी जो फ्रस्ट्रेशंस है ब्लॉग करते वक्त, उसको भी हम यहीं पे आके धो देते हैं, मन को हल्का कर लेते हैं सबके साथ बात करते करते. और आप जैसे लोगों से बात भी करते हैं. जी, एग्जैक्टली, शेयर करते हैं. एग्जैक्टली. सो हम ये वी डू दिस वीक आफ्टर वीक. अगर आपको जाके हमारी प्रीवियस वर्क चेकआउट करनी है तो ये एक प्लेलिस्ट में आपको हमारी जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पे मिल जाएगा, या फिर मैं यहाँ पे आपको लिंक डाल दूँगी. प्लीज़ गो एंड चेक अस आउट. दैट इज़ वन. आई डोंट नो व्हाट फिंग यहाँ क्या कर रहा है मीन्स.
अब्दुल सुबान जी, प्लीज़ बताइए व्हाट यू मीन बाय दैट. आप लोगों को ये फाइनल कैसा लगा? प्लीज़ ड्रॉप योर कमेंट्स इन द चैट बॉक्स हियर सो दैट वी ऑल्सो नो व्हाट यू फेल्ट. चलो, सो हमने पुणे की बात की है, जयपुर की बात की है, उन दोनों की जर्नीज़ की बात की है. लेट्स लुक एट राहुल चौधरीज़ रोल, बिकॉज जब ये मैच ख़त्म हुआ था तब one of the things that Abhishek had said was this title is for Rahul Chaudhary because after working season after season to prove himself, he has managed to finally win his first PKL title. Mayank, your thoughts on Rahul Chaudhary's performance this season? Yeah. So it like the life came full circle to him. He started leading Telugu Titans. एक अकेला बंदा था जो टीम को कैरी करता था. एंड अभी देखो एक पूरा चक्कर आया है इस बार टीम ने उनको कैरी किया है, नॉट इन अ नेगेटिव कॉनोटेशन, एज इन टीम वाज सो गुड एंड ही वाज द पार्ट ऑफ द टीम, ही वाज वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ द टीम. एंड टीम ने एक तरीके से उनको, उनके जो ऑब्वियसली बात है, उनको शोमैन कहा जाता है इस पीकेएल का, क्योंकि उनके अंदर वो जो चार्मिंग है, वो उनका जो मैच प्रेजेंस है, वो सब कुछ को देख के कह लो तो एक तरीके से उनको रिवॉर्ड बैक मिला है अपने काम का. एंड एज फार एज हिज प्रेजेंस कंसर्न इन द टीम, आउट एंड आउट रेडर के हिसाब से ही वाज नॉट दैट गुड, लेकिन जो जो रोल उनको दिया गया था इस टीम ने, उन्होंने वो बखूबी निभाया. अगर हम जब भी राहुल चौधरी का नाम लेते हैं तो हमको उनके बेस्ट सीजन्स याद आते हैं कि किस तरीके से सिंगल हैंडेडली ही वाज द बेस्ट एट हिज टाइम, तेलुगु टाइटंस में जब थे. तो हम उनको अभी से कंपेयर नहीं कर सकते. उस चीज को 7-8 साल बीत चुके हैं, जब 14, 15, 16 दैट टाइम. लेकिन इस यहाँ पे भी आके उनका रिजरेक्शन हमने देखा है कि क्योंकि उनको हमेशा स्टार्टिंग के रेट में भेजे गए थे, उनको पहला रेट करते थे वो हमेशा टीम के लिए, और मैक्सिमम टाइम पे इधर वे बोनस और टच पॉइंट वो लेके आते थे. एक तरीके से स्टार्ट देते थे. एंड देन ऐसा नहीं है कि उनका खराब परफॉर्मेंस नहीं आया है, खराब परफॉर्मेंस भी आए हैं, 2-3 अच्छे सुपर टेंस भी आए हैं, जिसमें एक रिमेंबर एक में तो ही एंड अर्जुन देशवाल बोथ हैड 13 पॉइंट्स. उन्होंने शायद आई गेस दबंग दिल्ली थी, वो पुणे की लेग में था ना ये, आई गेस दबंग दिल्ली थी मुझे अगर या दिल्ली था. हाँ, तो उनको एनाइलेट किया गया था. तो ही हैड बैड गुड एवरीथिंग विद द टीम. इवेंचुअली ही इज द पीकेएल टाइटल होल्डर विद जयपुर. सो एंड अगर आप पोस्ट इंटरव्यू देखोगे अभिषेक बच्चन का, उनके लिए जो रेस्पेक्ट है, मतलब एज अ प्लेयर के लिए, वो बहुत कुछ शो करता है कि क्या क्या अचीव किया अपने लाइफ में राहुल चौधरी ने. और जो एक मिसिंग वॉइड था वो कल जाके फाइनली फिल भी हुआ उनके लिए. एब्सोल्युटली. और अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो हमारे जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पे सीजन 7 से राहुल चौधरी का एक इंटरव्यू है वे ही वॉज विद तमिल तलाइवास इन दैट सीजन, लाइक ही जस्ट जॉइन तमिल तलाइवास इन दैट सीजन. और ये इंटरव्यू उनकी प्री सीजन ट्रेनिंग कैंप से थी, जहाँ पे वो बात करते हैं अपने सीज़न के जो एम्बिशंस हैं, तेलुगु टाइटन से मूव ऑन करने की बात करते हैं. एंड दैट इज़ द इंटरव्यू वेयर आई थिंक ही स्पोक अबाउट द फैक्ट दैट नई शादी हम करेंगे टाइटल जीतने के बाद. शादी हो गई, सब हो गई, टाइटल कल आया था उनके लिए. सो आई थिंक इन अ लॉट ऑफ वेज a lot of boxes have been checked for him and well deserved. हम लोग, I mean, see, a lot of people say a lot of things about him, about how maybe उसका थोड़ा attitude होगा, या फिर he, you know, wants the attention to be on him because that's the kind of player he is. But you cannot deny that he's been one of the most easily maybe watchable raiders in the league's history. So उसके थोड़े थोड़े झलक हमें इस season में दिखाई दिए. But I think what you need to see is this final was a little interesting because ये दोनों जो teams हैं, both of them had Rahul Chaudhary at some point. So Jaipur had Rahul Chaudhary this season. Puneri Paltan had Rahul Chaudhary last season. And you had people like Nitin Tomar also in that team who had to sit out because of injury for the entire duration of the season. So Rahul Chaudhary at one point was the only experienced raider. Wahan bhi. Pune had this problem last year also, where the experience came only from one or two sources. वहाँ आई थिंक अनूप कुमार जब थे कोच, दिस इज़ समथिंग वील हैव टू आस्क हिम अबाउट, ऑब्वियसली मैं उनके लिए बोलना नहीं चाहती, पर आई डोंट थिंक पुणे उनका जो एक रोल था वो अच्छे से फिगर आउट कर पाए. लास्ट ईयर ही वॉज डूइंग द सेम थिंग, वो रेड भी मारते थे, डिफेंस में भी ही यूज टू हेल्प आउट, बट आई डोंट थिंक दे स्ट्रक द बैलेंस द वे जयपुर हैज स्ट्रक द बैलेंस दिस टाइम. सो दैट हैज़ बीन वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच. उसका एक पर्सपेक्टिव है, व्हेन वी स्पोक टू द कोचेज, लाइक वी स्पोकन टू Manpreet and to Randir and to all these guys. So there's one perspective that Anup Kumar is still younger compared to the other coaches
in the Pro Kabaddi League because he stopped playing just 2, 3, maybe 4 years back. Okay, so people still look at him as a peer. Like ठीक है सीनियर है पर स्टिल प्लेयर ही होगा. मनप्रीत का भी यही प्रॉब्लम होता रहता है. ही कीप सेइंग ऑल्सो कि मे बी मुझे अपने एज ग्रुप में या अपने एज कैटेगरी में दैट जनरेशन इज़ वॉट दे सी देम एज. सो उतना डर या उतना रिस्पेक्ट शायद बना नहीं पाते जितना मे बी दैट काइंड ऑफ कंट्रोल दैट मे बी अ रणधीर सहरावत और राम मेहर सिंह हैव ऑन अ टीम. दैट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर समबडी who is in the similar age category to inflict on a team. Was that Anoop's problem? I don't know. But, or for that matter, even Manpreet and Rakesh, who was with Haryana Steelers last year, was that their problem? We don't know. But in this case, they had Sanjeev Balia, who is a very, very experienced coach. In fact, he has led Patna to one of their titles. उन्होंने बोला भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पटना जब जीती थी बहुत सारे लोगों की नाम ली जाती है, शायद मेरी नहीं ली जाती. So I'm sure at least people will remember कि he has led Jaipur to this. He does not attend press conferences. So yesterday was the first time I think he came for a press conference because usually Upendra Kumar comes to talk to the media. पर कल बहुत सारी चीज़ें बोल के चले गए that he was happy with how his team has performed, how different people have stepped up at different times. जब एक चीज़ नहीं चलती दूसरे लोग आके चल जाते हैं, which is very nice. It's very nice to see that that culture is built up in Jaipur. But I think उनकी ये जो टाइटल है, one of the biggest success stories they can associate with that is that they have found how to use Rahul Chaudhary properly. And good for him that he has a title to show for all that he has achieved in the league so far. So वो रही एक बात. Next, Mayank, is there anything you want to add before we move to Fazel? No, I really like the way you added the coach as well क्योंकि हम बहुत कम बात करते हैं उनकी. Like obviously बात है कि हम पीसी रमेश हो गए या राम मेहर हो गए या मनप्रीत हो गए उनकी, क्योंकि वो वोकल हैं, वो ज्यादा बोलते हैं, उनके बारे में हम ज्यादा बात कर सकते हैं. लेकिन एज फार एज कोच इज कंसर्न वो उतने आते नहीं. आपने जैसे सेम कहा तो उनके बारे में इतनी बात भी नहीं होती है. लेकिन जितना मैच पे लोगों प्लेयर्स को क्रेडिट मिलता है उतना ही मैच के पीछे एक कोच को भी क्रेडिट मिलना चाहिए. एंड इट्स वेरी गुड दैट यू पॉइंटेड आउट एंड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज वेल. सो इट फील्स गुड. Absolutely. So that's one. What do we have to talk about next? The next thing I had noted down was what next for Fazel. I am only writing this here because Fazel kept saying yesterday that this is probably my last chance to win a title as a captain. This is my last chance to try and win a thing as a captain. I'm not sure why he said that, but it could also be because season after season यहाँ पे auctions होती हैं and teams decide to rejig their lineups and everything. But I was looking at Twitter yesterday just to see how people are responding to the match and how they're responding to Puneri Paltan. And I saw a lot of people saying Pune should retain him. Now, whether they will, whether they won't, I don't know. I'm not sure. Fazel also said whether I am there in Pune or not, they will perform really well next year. But I think uska jo role hai is a very interesting conversation to have in the Puneri Paltan setup because when they roped in these two Iranians, not just Fazel, even Nabi Baksh, they brought them in primarily for their experience. So these two were supposed to handle calming the team down, teaching them how to work under pressure. तो ये आधा coaching job ही हो गया था ना कि you have this team sort of dealing with one half. Like if you see in the Nabi Baksh feature that we have, Nabi Baksh tells us that he handled the raiders, Fazel handled the defenders when it came to teaching them mat पे जब वो training चलाते थे and stuff like that. So that's a lot of responsibility. And इतने लंबे season में अगर आप दो players को ऐसे, अलग बात है कि they are clutch players, they do perform, but it's a lot of responsibility to put on one person. So I don't know why Fazel keeps saying that he might not find opportunities. I don't know. Maybe reverse jinx कर रहा है क्या? No, what I feel is I think उसने भी ऐसा सोचा होगा कि this is the best chance he could ever get. Yeah. क्योंकि इतनी complete team के साथ इतना dominating performance after league stage दिखाने के बाद this is the closest he can come. आगे क्या होगा किसी को नहीं पता है. मे बी एज फार एज पुनेरी पल्टन का सेटअप इज कंसर्न, they pulled off such a good team क्योंकि उन्होंने इतना सॉलिड टीम, इतने बढ़िया प्लेयर्स के साथ जिसमें एक्सपीरियंस भी हो, जिसमें यंगस्टर्स का ब्लड भी हो, एक अच्छा अमेलगमेशन बैठा के रखा था सब चीज का. तो एज अ प्लेयर अगर आप सोचोगे फजल के लिए भी, तो उन्होंने भी कितनी प्लानिंग की होगी और कितना वेट किया होगा इस दिन का. तो मे बी ये भी हो सकता है कि साइकोलॉजिकली भी अब शायद वो थोड़ा टायर्ड भी फील करे हुए कि या वो अगर आप देखेंगे इतना क्लोज आने के बाद थोड़ा मोटिवेशन तो लूज होता ही है. बट दे आर प्रोफेशनल प्लेयर्स, दे हैव टू कम बैक. एंड जो माइंडसेट है फजल का,
I'm pretty sure that he is going to come back with a lot more motivation to win the title क्योंकि he deserves it. Yeah, you know what? I kind of feel like that motivation might go to the Asian Games. I hope it does because I then hope it that'll. does. Yeah. I hope it does. Yeah, that'll make for some good kabaddi. But yeah, Yeah. I'm glad you brought this up because he did speak about the fact that lamba season hai. After a point, like we managed to catch Fazel at the end of the playoffs. So I think that's 2-3 matches before the semi-final. So जब हमने बात किया था, we like in passing, I just asked him, "Are you feeling sad that the season is ending?" He's like, "No, I'm waiting to go home. 3 महीने हो गए away from family, away from this. We're just training. Like it's getting up in the morning, training kabaddi, then again training, then video analysis, then sitting down for strategy. Particularly for Fazel and Nabi, it became a very taxing thing because उनको day in day out PKL, Puneri Paltan, kabaddi ये सभी सोचना पड़ा. So there's and that is the flip side of you thinking for 7-8 people in a team. So here at that point said कि stress मेरे लिए second skin हो गया है, हर रोज stress होती रहती है, ये होती रहती है, वो होती रहती है. But that's a little unfortunate. I hope he gets some time to relax. And अगर ये जोश हमें Asian Games में दिखाई देगा या फिर if there's any other friendly or anything that manages to come up, if we can see it there, that will be great. फजल ने बहुत बात की है इस बारे में कि वो बहुत डिसअपॉइंटेड रहे हैं कि पिछले 5 सालों में इतने इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स नहीं हुए हैं, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द कोविड पैंडमिक, but also because we've not seen anything happen even after the pandemic sort of got manageable. Like जब बहुत सारे other sports were coming up, PKL came back despite a season's cancellation, but internationally we have not seen anything happening. And Jaiz hai ki they are disappointed, not just Fazel, even Abozar, we had spoken to him at some point, which we'll share with you in a couple of days. He had also said ki I'm just disappointed, mere paas I should have had at least 5-6 medals more. And I've lost that period of time in my life. तो मैं क्या करूँ? There's no chance of bringing it back. So कल की जो loss है फजल को doubly चुभा होगा because that's another silver medal and he does not like the color silver. So he had spoken about that multiple times. देखते हैं अगर Asian Games में वो लोग इससे सुधार पाते हैं. That Asian Games conversation is also very interesting to have because ईरान की team combination क्या होगा? Who are their raiders? इंडिया की टीम क्या होगी वो भी India at least has a surplus. So we have, if you guys buy the Hindu newspaper, or I'm sure at least you know of the Hindu newspaper, we have one of our senior desk in charges, Mr. Narayanan. He always says that it's easier to have excess and cut down than to have deficit and try to build up. I think nothing explains the Indian kabaddi scene better than this. हमें हर एक position में 5-6 options हैं. We have multiple defending options, multiple raiding options, especially if you look at this season, so many youngsters have stepped up, so many. So you're spoilt for choice in terms of who you can take, who you can't take. Obviously, among the senior players like Pawan and all of that, it's dependent on injury. Let's see कि क्या होता है. कल रणवीर सिंह के साथ बहुत tackling किया, so I hope he's rested his knee a little bit. Ranveer is a Puneri Paltan fan, by the way. Big support. And yesterday at NICI Dome in SVP Stadium, पूरा का पूरा जो सपोर्ट था वो मैक्स टू मैक्स वो पुनेरी के लिए था. जैम पैक थे. अभी महाराष्ट्र में फाइनल लगाओगे, एक पॉइंट के लिए उनको जो सपोर्ट, होम क्राउड का जो सपोर्ट मिल रहा था, दैट वाज ट्रेमेंडस. Yeah, absolutely. And I think there were some very interesting things that happened after the match also because, and obviously we were not there because we've got the World Cup and all of this happening, so we're in Chennai watching the game. But we were seeing stuff that was happening on broadcast and some of the things were so heartwarming. Yeah. So Ajit, the raider who managed to do so well for Jaipur Pink Panthers, has played under Fazel in New Mumbai. So we saw one of our reporter colleagues had shared a photo where Ajit went and put his gold medal on Fazel's neck. It's so heartwarming to see things like this. Wow. Because Ajit, if you look at it, he had a very tough time. And I'm not saying tough time because problems हुए थे, but he had a tough time because he is relatively younger and he had an issue sort of settling into life at U Mumbai, and Fazel is one of the earliest people to reach out to him and help him ease into U Mumbai. So if you talk to Ajit now also, he keeps saying Fazel Anna did this, Fazel Anna did that, Fazel Anna spoke to me, Fazel Anna gave me feedback. ये बार बोलता रहता है. So to see him go and do that was very heartwarming. That is one. And Fazel obviously has spoken multiple times about Aishwarya Rai being his favorite actress, and he managed to go and talk to her also. And Nabi Baksh, all these guys were taking pictures. It's nice to see कि कोई dejected होके they weren't just
Yeah. drowning in that moment. It's nice to see that camaraderie and everything. As soon as match finished, सारे के सारे प्लेयर एक साथ थे, Yeah, एक गले साथ मिल रहे खड़े रहे. थे. Exactly. And Abhishek Bachchan, for what it's worth, he's very respectful towards his opponents. We have to say that. He immediately went and spoke to every member of the Puneri Paltan team. And he said कि मैंने सीजन के पहले ही बोला था कि he said Pune, Yeah, Pune. Pune will come to final, and Pune season something on those lines. He said कि बहुत strong team है, अगले season final, something on those lines. Yeah, what he said was when the final was against Puneri Paltan, he apparently when he met the team before the final, he said मुझे थोड़ी सी घबराहट हो रही है because Pune is strong. They have a strong captain and they have a strong bench. सुनील ने उस वक्त बताया था कि आप चिंता मत करो, हम ट्रॉफी लेके आएंगे, which he ended up doing. But what Abhishek sort of managed to underline is look at the talent in this Puneri Paltan side and see the kind of bench strength they've managed to do. And he said, don't be surprised if they make the playoffs next year. So if honestly, I think they have a decently working unit. Obviously, they can think if they want to cut and chop and whatever. But if this same unit had to play next year, I think they will still do well if everybody is fit. So their one priority needs to be to get people fit and try and rotate your squad a little more so that when you need your bench ke players to step up, it's not like deer in headlights kind of situation. They can actually step up and do something worth it. And इनके केस में एक अच्छी बात है कि इनके जो बेंच के प्लेयर हैं, they are still on that level कि जो उनका फर्स्ट 11 में खेल सकते हैं, फर्स्ट 7 में खेल सकते हैं. क्योंकि बाकी टीम्स को हम देखा है कि फर्स्ट 7 तो अच्छी है, सेकंड जो बेंच है वो उतनी स्ट्रांग नहीं होती है. ऑब्वियसली बात है, सबको उतने स्ट्रांग प्लेयर्स नहीं मिल सकते हैं. लेकिन जिस तरीके से इन्होंने ग्रूम किया अपने सारे यंगस्टर्स को, उन सबके अंदर वो क्या कहते हैं, वो रेज दिखा टू परफॉर्म, टू हैव टू बी इन द टीम, to show their skill set. Absolutely. Mayank, इसके दो actually perspectives हैं. आप इसको इस टाइप में भी देख सकते हो जहाँ पे everyone was sort of even level, right? Bench पे जो भी थे, more or less एक ही level पे थे. But the other way of looking at this is they didn't have that Arjun Deshwal type standout player who could, okay, अगर कुछ हो जाता है तो ठीक है, and Nabi Baksh is that player for them, but Nabi Baksh cannot work that way because that's not his role. उसका role नहीं है कि out and out जाओ, put your body on the line and get points. So when you don't have somebody to step up, like Aslam did this for them last season. Aslam was that player who stepped up and went ahead and got them points. And I still felt कि अगर असलम या मोहित दोनों में से कोई एक होते तो अभी भी उनके ये सिचुएशन होता नहीं कि वो पक्का मैच वहां से लेके जाते. Yeah, more than Aslam, I think Mohit का do or die. They struggled in do or die yesterday. So if Mohit was there, he would draw out errors. He was able to get multiple points in these do or die raid situations. They missed Mohit a lot. कल जिस टीम ने ज्यादा एरर्स किया वो हारी, that is पुनेरी पल्टन. जिस टीम ने कम एरर्स किए, जिस टीम ने ज्यादा क्लीन गेम रखा, they won. Simple as that. Absolutely, no doubt. So we've discussed 4 of the 5, I think, main things that we wanted to talk about. The last thing that we want to discuss is when you look back at the season, Mayank, what are your takeaways? अगर आपको broadly, okay, you know, at the end of it, इतना क्या, कितने हफ्ते हो गए? 10 weeks? 11 weeks? 10-11 weeks. 10-11 weeks, right? Somewhere between that. Yeah, around plus or minus 1. If you have to look back, what are the things you will remember the most? First thing I would remember is the fighting spirit of all the teams, क्योंकि इतना close game रहे थे. हमने देखा मिड ऑफ द सीजन इतनी सारी टीम्स जो थी वो इतना चेस कर रहे थे एक दूसरे को, एक गेम ऊपर नीचे लगातार टेबल शिफ्ट चल रहे थे. आई विल रिमेम्बर कि हाउ बिग नेम्स फेल एज फार एज तेलुगु टाइटंस आर कंसर्न, क्योंकि इतनी स्ट्रॉन्ग टीम ऑन द मैट, ऑन द पेपर होने के बावजूद जिस तरीके का उनका परफॉर्मेंस था, आई विल रिमेम्बर दैट. एंड two main things is the resurrection of Tamil Thalaivas, the way they played. उससे मुझे थोड़ा पर्सनल कनेक्शन भी कह सकते हो, क्योंकि मुझे वो टीम काफी पसंद आई जिस तरीके से उनका ब्रांड ऑफ कबड्डी देख के. एंड द डेप्थ व्हिच पुणे हैड, मतलब आई डोंट नो, मैंने शायद उतना फॉलो नहीं किया है तो मेरा ये कहना गलत होगा, लेकिन मैंने जितना फॉलो किया आई फील कि जो स्ट्रेंथ थी इनके स्क्वाड में, वो स्ट्रेंथ किसी भी सीजन की किसी भी स्क्वाड में मेरे हिसाब से तो नहीं है. इफ आई एम रॉन्ग प्लीज करेक्ट मी. सही बात. एंड अगेन जयपुर पिंक पैंथर्स, जिस तरीके से उनकी सॉलिड उनके जो टॉप 7-8 थे, अभिषेक केस उन्होंने लेके आए, जो अभिषेक केस पूरे सीजन खेले थे इंस्टेड ऑफ राहुल चौधरी, उसको छोड़ के जो उनका जो कोर है, उसने जो परफॉर्म किया एज अ टीम, इट्स फेनोमेनल.
So these are the few things which will stand out of so many things else. There are so many things, क्योंकि इतना लंबा सीजन हो जाता है, we often tends to miss so many things, कि जो हमने देखा इतने सारे टाइज हुए हैं. Yeah. If we'll go back and see कि ऑलमोस्ट सारी टीम ने टाई खेला है. चार तेलुगु टाई, तमिल थलाइवास ने खेले हैं, मतलब मल्टीपल टीम्स ने मल्टीपल टाई खेले हैं. तो सोच सकते हो कितना क्लोज गेम, कितने क्लोज एनकाउंटर्स रहे हैं. और ये शो किया है कि इंडिया हैज सो मेनी गुड यंग प्लेयर्स. उनके पास इतना, अगेन आपने जो बोला मैं वही रिपीट करूंगा, कि इतना डेप्थ है इंडियन लाइनअप में कि आई डोंट नो इतने ज्यादा ऑप्शंस होने के कारण, आई डोंट नो, मे बी समथिंग, आप किसको लोगे आपको खुद ही नहीं पता है. आप जिनको लोगे, आप इंडिया की खुद की 4-5 टीम बन सकती है, Yeah. ABCD, एंड दे कैन compete with each other, and anyone can win. That's So right. these are the few things. The only and problem is there are no competitions. Exactly. So I don't know what else to say. Fair enough. If I have to look back, there are some specific moments that Rahul Please, Chaudhary please. 13 Yeah. rate points was a Yeah. standout. I don't think anybody in that stadium in Pune expected him to do that, and they were very happy to see glimpses of old Rahul Chaudhary because he was screaming and cheering and he was doing all of that. So that was very funny to watch. That is one. Another standout moment has to be that Nabi Baksh super tackle, yaar. Yeah. Cannot get better than that. He did that even in one of the, I don't know who he brought down yesterday. Ajit hi hoga shayad, but he brought down somebody like that yesterday also. Super tackle obviously nahi tha, but it was like a combination tackle with Fazel. It's insane. He as a defender is just insane. That is one. Tamil Talaiwas ki story to I think will be the fairy tale story of this season. Everybody more than winner, runner up, whatever will remember this season for what they managed to do. So that has to be like a massive talking point from this season. The other thing is I think an obvious consequence is season ka has been that the game has become a lot faster because there are more youngsters in each of the teams. Sirf ek do aisa nahi hai. All the teams have preferred to go with youngsters more than older players, except Telugu Titans, and we saw where they ended up in the points table. But the game has become faster. You see in a lot of games, you at least towards the Hyderabad leg and all, wo third raid aata hi nahi in so many games. That Yeah. has become a lot more frequent this season than the previous season. So I think that's very interesting to see. And we are going. Lavanya, one more Yes, thing. I yes. missed one specific player जो मेरे दिमाग में था, and I thought कि मैं उनका नाम लूंगा, Yes. क्योंकि he impressed me a lot by his perseverance. जो उन्होंने अपने टीम को कैरी किया eventually. Who is this? इस प्रतीक दहिया. क्योंकि जिस हिसाब से गुजरात को सबने आउट ही करके रखा था, उन्होंने उनके खुद के परफॉर्मेंस की वजह से. Yeah. लेकिन आप देखोगे तो ही 170-180 रेड पॉइंट्स और मैक्सिमम उनके सेकंड आखिरी 8-10-11 मैचेस में आए. तो जिस हिसाब से उनका भी परफॉर्मेंस रहा अपनी टीम के लिए, Yeah. ऑब्वियसली बात है, इतने सारे प्लेयर्स हैं, सबने इतना अच्छा परफॉर्म किया है. इवन तो उनकी टीम ने खराब किया है. 240 प्लस से 6 रेडर या 7 रेडर्स है जिनके 240-230 प्लस रेड पॉइंट्स हैं. तो इन सब में से एक को निकालना, एक को कहना थोड़ा अनफेयर भी होगा बाकियों के लिए. बट ही वाज द प्लेयर हु इम्प्रेस्ड मी अ लॉट, इज व्हाट आई मेंट टू से. Absolutely. Definitely a talent to watch out for, especially ugly season. Because you brought up Pratik Daya, I think another interesting thing to see for next season would be how they utilize their bench. Because ऐसी बहुत सी टीम्स हैं जहाँ पे प्लेयर एक रोल में शुरू हुआ है and then he has ended up doing something else towards the end of the season. Yeah. अगर आपको पता है कि ये इसका capability है, then onus is on you as a coach to figure it out. So the primary example would be Ashish. आप कंफ्यूज करके रह गए कि he is a defender or he is a raider. Exactly. And Pratik Daya as well. Pratik Daya अगर इतना अच्छा होता रेडिंग में, why didn't you support Rakesh early on? Yeah. If that had happened, then Rakesh and Pratik would have run for longer and they might have actually been in the playoffs. You never know. Yeah. So whether they deserve to be there or not because their defense was really bad is another conversation. But we have seen कि अगर Dabang Delhi with all its problems could make the knockouts, then I don't see why Gujarat... Any team could have. Exactly. I don't see why Gujarat couldn't... You remember कैसे कितना खराब डिप हुआ यो मुंबा का. मतलब यू मुंबा की जो डिफेंस की बात करते थे हम, लाइक मोस्ट सॉलिड डिफेंस, रिंकू हो गए, सुरिंदर सिंह हो गए उनके पास. तब जो उनके कैप्टन की स्लीव पहनता था वो सबके सब एक लेवल अहेड खेलते थे. बट यार देयर आर सो मेनी टीम्स जिन्होंने अपने पोटेंशियल पे नहीं खेला. Yeah, but also comes down to injuries. It comes down to injuries. Surinder not being there affected that team's balance. Guman going out in between affected the team balance then because he had an injury to his jaw.
Surinder Gill went out for UP Yodhas. It shook the balance there. But Pardeep Narwal sort of stepped up. But again, final में आप उसको ले आए, उसका sort of expose हो गए वो लोग because you're bringing him back in the crunch match. So then they weren't able to go through. Injuries के वजह से जितने सारे teams की momentum हिल गई है, I think that's a lesson for physios and for teams also to make sure that these players remain fit throughout the year. I'm not sure if that's something that happens because But Lavanya, I yeah. guess as far as kabaddi is concerned, as a sport, ये कॉन्टैक्ट स्पोर्ट है एंड आई डोंट थिंक कि ये इनएविटेबल होगा. इनएविटेबल है क्या? मतलब इंजरी आपको शायद होंगे पर फिटनेस इनएविटेबल नहीं है. देयर फिटनेस, आर हाँ, फिटनेस एंड इंजरी ऑब्वियसली आर टू डिफरेंट थिंग्स. फिटनेस yeah, तो the issue here, like for example in Pawan Sehrawat's case, and I don't think I am saying this to single out Randir or anything, but a lot of people in the league will tell you that is not a mat injury. Like it didn't happen because his leg got stuck in the mat or something. He didn't warm up is what Randir Sehrawat seems to think, and that man knows Pawan better than most. So he believed that शायद वार्म अप ठीक तरह से नहीं हुआ था, which is why his leg even twisted that way. Because okay. constantly from I think season 7 he's been wearing tape on that leg. So it's not like नया था या कुछ था. If you knew there was a problem, then your regimen before also needs to be that much tighter. So Randir believes that if Pawan was still under him, then that injury would not have happened, and that is saying a lot. And he said this on record. So that is saying a lot when it comes to injuries. And likewise, if you look at like say Pardeep Narwal को अगर आप season के first day पे देखोगे, and then if you look at him towards the Pune leg, look at the amount of weight he's lost. Why did that happen mid-season? Yeah, why did that happen mid-season? तो 2 हफ्ते चले गए ना आपके. If you're looking at it even individually, अगर आप एक रेडर को ही देखें, even just for his own sake, agility improve हुआ, he was able to and इसका उनका फिटनेस एंड उनका परफॉर्मेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. जितने exactly फिट होते गए वो उतने एजाइल होते गए, वो उतने exactly फास्ट होते गए एंड उतने बेटर होते गए. exactly like when his last season with Patna Pirates, this was the problem. His dubkis were failing because he was not able to slide through. So it comes down to all of these things. आपको अगर दूसरे यंगस्टर्स को देखेंगे, the players are becoming leaner. Like if you look at Aslam, Mohit, look at their build. They're all leaner. कोई भी राहुल चौधरी के टाइप हट्टा कट्टा नहीं है अभी, especially raiders more than defenders. So when you look at this, you need a certain level of fitness. Teams also need to maybe figure out what needs to happen. Obviously it comes to the thing of auction की exercise है. They might want to let a few players go. How does that work? So that is something that the Pro Kabaddi League has to figure out. How do you invest long term in these players? Puneri Paltan that way has mastered this because of that Yuva Paltan system that they have. Very true, very true. Yeah, because of that they've been able to groom players, and they have an academy in Thane, so they're able to groom them, give them continuous support through the year. And honestly, a lot of credit here has to go to the owners, the Kotak family, Kailash Kanpal, their CEO, and Anup. We say a lot of things. PC Ramesh has done a very good job, but Anup really laid like Mohit and all are like direct disciples of Anup Kumar, who have he's really helped them come into what they've become later. So a lot of credit needs to go to the coaches who have come before also. Same way, like when I saw Tamil Talaivas had put up a post saying thank you, jo bhi hai, after their season, no? I don't know if they've ended with Uday Kumar on like bad terms, mujhe nahi pata. But they should have credited him as well, because for what it's worth, his strategies were not wrong. It's just that like you could hear him. वो जब कोई plan layout कर रहा था, चीज़ें भी वैसे ही हो रही थी match में. But it's just that this team at that point didn't have the motivation, or maybe they were just stunned out of the contest most number of times when they were losing just before Ashan Kumar took over. So I think all these pieces need to be credited for where the teams ultimately ended. So जब अगला season आएगा, it will be very interesting to see where these teams stand, who moves where, कौन कहाँ जाएगा. And since we're talking about memorable moments, I think we have to, at least from my side, have to talk about that Dabang Delhi versus Patna Pirates game. Has to be the best bloody game of this season. Has for to sure, be. Yeah, sure. Shadlu, just for him. 16 points is inhuman, yaar. Inhuman. I hope it comes down to a point where कोई ये beat करता है, because that will only show how much. With 8 super tackles. Yeah. That shows one hell of a game. Exactly. And the thing is, he managed to, I mean, obviously not to that extent, but बाद में भी ये करता रहा, and 2 seasons now he has finished as the second best defender. Second best. This season second best. Last season he was Sagar था ना? Sagar नहीं था?
Sagar was second best no last season, If not he's this finished one. as best, well and good. So you see the difference here. This last हाँ season was जी, his. ला, ला, Nevertheless, last season Sagar was the second best Shadlu was the defender. first. Shaddo had 89 Great. last Okay. season. So yeah, he's finished with 89 and 84, right, this time. Yeah. Yeah, which says a lot, यार. And 84 this time also because he had a quiet couple of games in the beginning. अगर वो time पे आ जाता, if he was able to actually get into the groove earlier, who knows, he would have crossed that 90 barrier. So And 84 in just 20 games. Ankush has 89 in 24 games. yeah, So exactly. he has 5 more tackle points in 4 more games. Exactly. अगर मुझे नहीं लगता अगर No, but मोहम्मद if you have रेजा to के look at आने it से that way, Mayank, that might not be a fair this thing because 16 of Shadlu's points came from one game. one game, Yeah, so it's not that no, evenly spread yeah, out. no, what I'm telling is average tackle point देखोगे तो he has 4.2 tackle points per game, Shadlu, in 20 games. Yeah, So he has the best tackle average per game who right. has played more than 2 games. Because there are few players who has played 1 and 2 Fair and they enough. have the average of 7 and 8. So Fair that enough. doesn't count. Fair enough. So by average देखोगे तो he has been the best. Fair enough. Fair enough. So it's interesting to see what he'll do as well. And I think Shadlu ko agar aap, if you ever listen to him, you can go and check out his press conferences on Pro Kabaddi's website and all that. It's such a lesson in self-confidence, yaar. वो बार-बार कहता रहता है कि I know I'm the best, so I'm not surprised that I managed to do stuff like this. And then when people ask him about where he'll play in Iran, मैं कोई भी position में खेल लूँगा, मुझे problem नहीं है left corner नहीं मिला तो मैं यहाँ He's खेल दूँगा a वहाँ खेल दूँगा. he's So a charming personality very himself. much, very much so. And it's very nice to see him grow into the defender that he is becoming. Maybe we'll have, it's just another page in Iran's defending legacy here in PKL. But because we're talking about this, we're again coming down to a situation where Iran and India is the two countries that are able to benefit the most in, if I can call it that, from the Pro Kabaddi League. Yeah. हमें एक time पे we had so many brilliant South Koreans, of which Dong Kyung Lee was there, but you had Jang Kun Lee who's now playing football in Korea. I don't know if he plays kabaddi anymore. अगर आप उसकी Instagram जाके देखोगे तो he's constantly playing football. What a loss, यार. He was the top most expensive foreigner at one point and he was so crucial for Patna. And to just see him fade away is just heartbreaking. So because of COVID, a lot of these other countries have also sort of been hit in terms of how much of kabaddi they can pursue. उनके operations में या competitions में, जैसे फजल बोल रहे थे, international competitions नहीं हो रहे हैं, international meets नहीं हो रहे हैं, world cups नहीं हुए हैं in the last 5 years. So when it comes to things like this, you have no competitions, doesn't give countries an incentive to develop kabaddi where they are. So Fazel was talking about how like countries like Poland, UK, Australia, all of them have shown interest in taking up kabaddi. They've formed associations, they have teams. पर अगर competitions नहीं हो रहे हैं, what will they train towards? अगर sport में पैसे नहीं है, why will they want to come into the fold at all? So PKL में the organizers like Kabaddi Rao and all tell you about how they are trying to modernize the game. The shoes, the mat, all of this, the reviews, the cameras, all this is towards marketing this as a sport that even the non-mud mud sports involved nations can play, to basically make kabaddi a little more sophisticated for television and to maybe pitch it for the Olympics. But if that has to happen, we need regular competitions. We need more opportunities to see these people play internationally so that these teams develop, like Sri Lanka, who have players in the league this time. Aslam Tambi tha, wo Tanushka tha ek banda in Tamil Talaiwas. You have multiple chotu players. There's somebody from Nepal, I think, in Bengaluru Bulls. There are a couple of Kenyan players, Daniel and James, who played for Patna and UP. So you have all of these countries finding representation, but it feels like we're still stuck on the first step. Like सिर्फ introduction में ही हम लोग अटक गए हैं in terms of kabaddi all over there. So that's a conversation for us to have also between now and the next edition of PKL. कि क्या बदलता है in these countries? Does the league make any difference for them going forward? Is something that we will have to look at. I see that we don't have any comments, so should we wind up, I guess? If any of you have any last questions, comments, please drop it in the comments box so that we can address it. एक बात तो ये बोलना ही है, हम लोग जब ये पहले 2 हफ्तों में करते थे, we used to have like 5-6 people join us to Not even 5-6. 5-6 मैक्स था, 5-6 मैक्स था, ये ऐसे रहना, हाँ 5-6 मैक्स था जो शायद, and these were like regular people, 1 or 2 who'd like stay and comment, like Shubham. We have to give you a shout out, Shubham, and if I'm not wrong, oh god, I can't remember the other person's name यार. एक और था ना who used to constantly, I think Arjun something.
it was Arjun underscore something something something, and he used to come up with Patna के लिए cheer करता करता आता था. So we used to have these people who used to come in and constantly talk to us in the comment section. Kabaddi Yodha sport. Kabaddi, obviously. I'm coming to the later entrance in in chronological order. But yeah, we had Shubham and all are like our earliest supporters who were there with us from when we had 5 people on the stream to now 50 and 22 people on the stream. So thank you कि आप लोग आ रहे हैं हमारे साथ बात कर रहे हैं. It's fun to talk to you guys and listen to what you have to say about the game. This is our game. It's our country's game. So it's nice to talk about and discuss it here. Obviously, मज़े में आ जाएगा अभी withdrawal symptom now that there's no kabaddi after sitting with this for 3 months. But it gives us some time to rest. New Year भी आ रहा है तो I think we should get ourselves a break. But before that, Sportstar is covering the FIFA World Cup final today, and यहाँ भी we've been going at it for the last I think 18-20 days where बहुत सारी content available है जो आप जाके check out कर सकते हो. Argentina takes on France in the final today. अगर आप कुछ और कर रहे हो then we have live blogs जो आप check out कर सकते हो to see what's happening. या अगर आप मेरे टाइप बहुत नर्वस किस्म के आदमी या औरत हैं जो मैच नहीं देख सकते जब आपके फेवरेट प्लेयर खेल रहे हैं then you can just keep up with the game on the blog. So do make sure you check it out. We have a lot of content. Please go and check it out there. Shubham says hi. Hi Shubham. Thank you so much. You're one of our most valued. I don't know if you've subscribed to the channel. I hope you have. But if you have, you are one of our valued subscribers. Thank you for supporting us throughout this 10-week journey that we have had with all of you guys. Hopefully we'll try and find a way to do this more often, especially towards the Asian Games. कभी कभी आते रहेंगे to discuss what's happening in Kabaddi. Which may be something for us to do in the new year. अपना एक resolution मान के चलेंगे हम. We'll see if we can make this happen. Mayank, any closing thoughts after your experiences in the last 11 weeks? Oh, I guess it will be one very memorable, what to say, stint. Because I personally, like, honestly, I didn't have much interest in the game before coming to this thing. But इसके बाद से I'm pretty sure that I'm going to follow each and every step of what's going in and around with the Kabaddi world. I learned a lot in these 11 weeks. I started from nothing and I'm a big Kabaddi fan right now. And I don't know what else to say. I enjoyed everything in and around what we were supposed to do. Blogs हो गए, analysis videos हो गए, stat copies हो गए, live streams हो गए. So I enjoyed those 11 weeks and I'm pretty sure that coming weeks में अभी कबड्डी आज से है नहीं तो it is going to be a void जिसको fill करना थोड़ा मुश्किल होगा coming, but मेरे पास वर्ल्ड कप है, ऑप्शन आ रहा है, so many things are coming up, so yeah, we have to see that. Absolutely. So yeah, that's about it from us guys. Thank you कि आपने लगातार हमारे साथ जुड़े रहे throughout the last 11 weeks. Hopefully we'll come back soon. Until then, please take care. New Year भी आ रहा है, so have fun, enjoy yourselves, and we'll probably see you very soon with some more Kabaddi news. Thanks for joining us. Bye-bye.